Okay, great to know Manal is saying yes. So let's start off with today's class. Yesterday, if you guys remember, we ended up the discussion discussing this topic regarding fetch execute cycle. In काफी detail में उसको study किया, and then we had a discussion on how to improve the performance of your computers. And so today we are going to be inshallah starting off with this mini topic, a very minor topic, which is basically about instruction sets. So the word instruction set might be something जो आप लोग पहली दफा सुन रहे हो. It is instruction set. But what do you mean by instruction set? So till now, oh guys, I did not join it from my other account. Just a moment. Ahmed also joined in. Ahmed, आप बच गए हो यार, time पे आप आ गए हो. गलती से I didn't join in from my other account, and just let me set up my chat box. Just a moment. Done. Reduce, okay, and chat box. All right, so let's start off. No worries. We haven't started, to be honest. So yes, I was talking about the first thing which we are going to be inshallah studying today is basically something known as the instruction set. Now till this very point, we have studied the word instruction in a lot of points, like instruction printing, instruction for 2 plus 2, instruction might be any order, right? But now we are studying something which is basically instruction set. So by the term, you should get to know an idea that your instruction set might be a group of all the instruction that a computer can understand. Now, what do we mean by the word instruction set? So basically, instruction sets are a set of operation, So I will write it up here, are a set of operations. Now, what do we mean by operation? That's a good point, right? Operations basically refer to any task. In terms of computer, if I'm like, okay, open this file, that's an operation. Print this document, that's an operation. So instruction set is basically a set of operations. What do I mean by the word set of operation? It is a group of different operations. Remember that OSCE table we studied in chapter number 1? It was a group of all the characters, right? Just like that, if we group up all the operations that a computer can understand and we try to like gather it in a group or something or in a table, that table is going to be known as your instruction set. So instruction set में ना आपको एक चीज पता होनी चाहिए. Every operation is basically broken into two parts. One is known as opcode and the other is known as the operand. So these are two new terms which were introduced in the 2023 syllabus. So to the exam questions which are prior to 2023, उनमें आपको इसके related कोई questions नहीं मिलेंगे. But now there is this new part which is basically opcode and operand. So अब instructions and operation तो आपको clear हो गए. Like if I say print something, so this is an operation. It is a type of task. If I say copy this file from folder A to folder B, that is an instruction, that is an operation. But इसी operation को if I further divide it, just like in chemistry when you divide atom into electrons and protons and neutrons, just like that, if I break this operation into opcode and operand, आपके पास ये दो new types आ जाती हैं. And we just need to know in this very part कि यार opcode क्या होता है and operand क्या होता है. In your exam, the maximum the examiner might be asking you is to tell you what is instruction set, what is opcode and what is operand. तो आप लोग को ये तीन चीजें पता होनी चाहिए about this very small सी topic and you're good to go. So now if we discuss opcode सबसे पहले, so opcode जो आपका होता है ना, opcode is basically the thing, yes, opcode and operand. So these two, when you combine opcode and operand, it becomes an operation. And a group of operations is basically what we call as the instruction set. So that's the flow, right? So opcode क्या होता है? Opcode basically is that very specific part of an operation which informs the CPU that an operation needs to be done. Yeah, what operation needs to be done. So हम इसको define इस तरह करते हैं कि we will write is like opcode is that part of operation, is that part of an instruction or operation. Okay, आपकी एक ही बात है. Remember, it's instruction, not instruction set यहाँ पे. So instruction or operation, it's the same thing, which informs the CPU, what needs to be done. Like, अगर मैं ये बोलूँ कि I want to print something, what needs to be done. If I want to say that, let's say I want to print Rian's test,
अब जब सीपीयू को मैं ये प्रिंट का कमांड दबाता हूँ, लाइक इफ आई ओपन अप दैट डॉक्यूमेंट एंड आई गो टू द फाइल ऑप्शन एट द टॉप लेफ्ट एंड आई क्लिक दैट एंड देन आई एम लाइक print, right? So how does the computer know? Okay, okay, you press that print button. Now like my CPU needs to analyze, right? कि इस बंदे ने बोला कि print this document. ये कैसे हुआ? It is basically thanks to this op code. अब ऑप कोड आपके सीपीयू, आपके ऑपरेशन का वो पार्ट होता है which basically tells your CPU कि भाई this person is saying कि you need to print this document, and इसके अंदर जो हमारे चीजें इस्तेमाल होंगी, that is going to be your printer, that is going to be this file, it is going to be these buses through which I need to send data. So that specific part of operation which tells the CPU कि यार क्या चीज करनी है, whether that's printing, whether that's typing, whether that's downloading, whether that's copy pasting file, that's like deleting something या adding something new. जो भी चीज सीपीयू को ये बताती है कि ना bro, this is something we need to do, that is basically known as opcode. So the part of your operation or any set of instruction, इसको मैं यहाँ पे वो कर भी लेता हूँ कि I refer to operations as any command. So any command could be printing, maybe copy, paste, maybe for instance, we can also write it as maybe downloading something, or even opening files. So anything that your computer does. So उसमें जो instruction है बिल्कुल रेयान, the instruction कि यार क्या करना है, the process, यार what components do I need to include, how do I make sure कि यार the things start working, that is done and leaded by your opcode. अब opcode आपका ये तो CPU को बता देता है. Now you might be thinking चलो यार main चीज तो opcode बता दी है. Now what is operand, right? That should be a question. Now operand is basically the data which needs to be acted on, or it can be referred to a register in the memory. Like in simple words, if I say कि यार I need to print Ahmed's test, तो जो अहमद के टेस्ट को प्रिंटिंग वाली कहानी है ना, the printing part is basically dealt by your opcode. So your opcode is going to tell the CPU कि यार you need to print something, but what do you have to print? That is basically told by your operand. Operand basically tells the data जिसके ऊपर आपने instruction को execute करना होता है. So you write it as operand is basically the thing. It is basically the data which needs to be acted on. So इसको जो book में define किया, it is something like it stores the data. My bad, let me just erase it. Data. It stores the data on which basically the CPU needs to act upon or like execute it. So it stores the data on which the CPU needs to act upon. So like if I say download, if I say delete this folder which name is IGCSE, let's say for instance I'm deleting this folder, like you're done with your CS exams and you're like, okay yaar, I have very less space on my computer, so I want to delete this file, this folder which is named as IGCSE. When you delete that folder, this is an instruction, right? Delete the folder. That's an instruction. Now that is broken into two parts. One is known as opcode and the other one is known as operand. Now opcode is basically going to tell the PC that bhai, the person wants to make sure that the file is deleted. उसको delete करना चाहता है. So this deleting वाला part which basically tells the CPU कि यार you need to make sure that this no longer exists in the memory. That is basically done by your opcode. But now the CPU might be like, bhai, okay, I do understand that you want to delete the file, but what file are you wishing me to delete, to apply this delete command on? Like मैं किस file को delete करूं? That data, the point which includes the data जिसको मैंने उसके ऊपर CPU ने execution करनी है, that is basically your operand. So the operand basically stores the data on which the CPU needs to act upon. And also, it's not necessarily going to be only storing data. It can also like store register. Like if I'm saying the thing that needs to be deleted is exactly the thing that needs to be deleted, or the data जिसके ऊपर कोई instruction, कोई action act करेगा, that is basically stored in your operand. Now your operand can either store the data directly, like अगर operand के अंदर मैं directly store कर दूं कि यार the file name is this, or it can also store or refer to some register. Like it can also refer to some register in the memory.
Like for instance, register in the memory. Let me give you guys a quick example in the memory. आप लोग मुझे ये बताओ, if you guys if sometimes you want to delete something from your PC, you go to that control panel setting, you go to deleting file वाला option, and then you have that big box जिसके अंदर आपके गेम के या ऐप का नाम होता है. You click on that, there is an uninstall option on your PC usually. आप वो करते हैं and it gets deleted. But you know, you're using something else to maybe delete the whole file which may be existing in some other part of the PC, like memory mein na, it is there in your C folder, maybe in the program files 86 wale folder mein. Lekin at the same time आप delete तो control panel से कर रहे हो. So why is the data which is there in your C folder getting deleted? It is because जो आपका operand होता है ना, operand might be able to store data on its own. Yeah, it can also be like कि यार, if you want to delete, if I say delete this thing, तो यार आपने ये वाले जो address है ना, maybe आपने delete करना है the point which is 0110011 in the memory. So it tells the computer कि भाई go to this address point just like the MAR. तो हम MAR वाली कहानी यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं कि वी कैन ऑल्सो रेफर टू सम रजिस्टर, कि वी माइट बी एबल टू से कि भाई यू नीड टू गो टू दिस एड्रेस पॉइंट, एंड जो मैं आपको एग्जीक्यूशन का बोल रहा हूँ ना, वो आपने उस एड्रेस पॉइंट के ऊपर अप्लाई करना है. सो दिस इज समथिंग जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि you can store the data in your operand, and as well as that you can also refer to some register in the memory. So when I say register in the memory, I basically mean कि there is some folder, there is some file which is there in your hard disk जिसके ऊपर आपने इसको execute कराना है. So वो चीज भी इसके अंदर होगी. नहीं देखो, buses is a total different thing. Buses are used by the CPU. Like अब मैं इसको बोलता हूँ कि opcode and operand जो है, this is an instruction, right? अब ये instruction, this again goes to that fetch execute cycle. ये पहले program counter में store होगा, then it will go into control command current instruction register CIR, and CIR फिर उसको किस तरह execute करेगा, using buses, right? It's going to use data bus, address bus, signal control bus, and there will be signals, transfer of data, and उसी तरह तो buses are basically used to ensure कि आपका operation execute हो. यहाँ पे आपने ये समझना है कि जो opcode है, opcode आपके instruction का वो part है which tells the CPU कि क्या करना है, whereas operand is that part which basically tells your computer कि भाई इस चीज के ऊपर आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, whether that could be the data within the operand or the operand might be able to store the address of the data जहां पे आपने इसको एग्जीक्यूट करना है. So ये दो पॉइंट्स आपको समझ आ गए कि what is opcode and what is operand and what is basically instruction set. Instruction set अगर मैं बहुत simplified अल्फाज में समझाऊं, it is basically a set of operations that instruct the CPU how to carry out of an operation. तो like अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे फिर भी लिख देता हूँ, instruction set, this might be the perfect definition in my opinion. Instruction set are what? It is basically they are instructions that tell, that does what, that tells the CPU or instruct the CPU how to carry out an operation, that instruct the CPU how to carry out an operation. Also in your book आपके ना एक कोर्स में एक और चीज भी है. It is something जो कि आपको इस तरह बोला जाता है कि when dealing with opcodes and operands, आपके कंप्यूटर में, like just imagine, आपके ख्याल में से will we be having more opcodes या more operand definitely means यार data. So I might be able to make millions and billions of folders on my PC if I have the relevant space. So this means I might be able to have a lot of operands, right? But in the contrary side, if I look at opcodes, the computer might not be able to have a lot of instruction. Like usko set instructions pata hai na, it can be printing, it can be deleting, it can be copying, it can be pasting, it can be like ye nahi bol raha, there can be a lot of those things. Lekin as compared to the memory locations, आपके पास जो number of functions हैं, those steps, those instructions, these are definitely limited when compared to your operand. So in your course, you also need to know this one point, that the number of opcodes are less than the number of operands. And what's the reason?
The main reason behind this is because your computer can only understand a number of operations. There are a limited number of operations which your computer can understand. So हम इसको यहाँ पे रीजनिंग भी लिख लेते हैं, लिमिटेड नंबर नहीं. हाँ, ऑपरेंड स्टोर्स डेटा उसका तो समझ आ गया कि यार आपके पास बहुत डेटा हो सकते हैं तो ऑपरेंड्स बड़ी हो सकती है, लेकिन ऑपकोड्स क्यों इतने लिमिटेड है? उसकी वजह ये कि कंप्यूटर को हर चीज का तो नहीं पता ना. देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस which your computer can understand. So we will say कि इसकी जो वजह है कि why opcodes are basically less than number of operands is because there are limited number of operations that a computer can understand. That a computer can understand. So ये आपका एक बहुत ही माइनर सा माइन्यूट सा छोटा सा टॉपिक है which is known as instruction set. So आप लोग मुझे ये बता दें, is this whole कहानी clear? Instruction set is a set of operations that tells the computer कि क्या क्या वो हमने execute करना है या कैसे उसको execute करना है, how to carry out an operation. Operation further breaks into two parts, opcode and operand. Opcode is basically the part of operation which informs the CPU what needs to be done, whereas operand is the part of the operation which stores the data on which the CPU needs to act. Yeah, it refers to some memory register या memory point in your computer कि यार यहाँ पे आपने इसको execute करना है. And then the last part is that you should know that the number of opcodes are limited when compared to operands, thanks to the limited number of operations that a computer can understand. क्योंकि आप कंप्यूटर हर चीज तो नहीं समझते ना, देयर इज सम लिमिटेड थिंग जो कि हम उसको सिखाते हैं, तो जो उसको पता होता है कि डू दिस 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 which basically comes with your operating system, वो जो होते हैं that is basically very limited when compared to the number of operands. So is this clear or not, guys? Quickly in the chat box, everybody. Okay Ryan, great. बाकी भी बताएं जल्दी 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 जल्दी. Ahmed and Manal, is this clear? Yeah, do you have any sort of questions? If you do, तो just let me know. वरना फिर let's start off with the next part. Manal, is it clear or not? Clear, great. Now, we are done with 3.1 takriban. Very last thing which we need to study in basically this 3.1, the first mini chapter of chapter number 3, is basically what is known as embedded systems. Embedded. Yes, we will be getting a worksheet. You guys will be getting a worksheet. And also at the same time, I'm planning on taking one extra class tomorrow, inshallah. Because if you guys remember, I missed one class. 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले. So I will be taking that class tomorrow. Do note that. मैं message भी group में कर दूंगा. At the same time, is it possible आप लोग join कर लें tomorrow if I take a class on हाँ कल इसी time 4:30 to 5:30? Will you guys be free to join in? या नहीं? I know it's your vacations, लेकिन still अगर possible हो तो do let me know. If not, तो फिर भी let me know. मैं फिर कोई सीन कर लेता हूँ. PMO क्या होता है भाई? देखो, oh my bad man, my bad. नहीं लेकिन देखो these classes are important. It's there to ensure कि आप लोग की तैयारी अच्छी हो. And the good part will be जो worksheet मैं आप लोग को दूंगा ना, that will have a longer deadline. तो आप लोग वो जरूरी नहीं है कि आप वो संडे तक मुझे वो दे. That could be done by Wednesday. So आप वो आराम से कर लेना. And कल की क्लास सबने लेनी है. That is important, guys. Okay, just 1 hour and then you guys can chill. Okay, perfect. Now starting off with embedded systems. Now हम अभी इस चैप्टर में ना काफी चीजें पढ़ते हैं. You might have heard the word input devices. You might have heard the word output devices. You might have heard sensors. You might have heard computers, tablets. But there is this one new type of technology known as embedded systems. Now we will be exploring what do we mean by the word embedded system. Now embedded system क्या होता है? Embedded system is basically it is a type of combination of hardware and software which is designed to carry out a specific task, only a single specific task. So अगर आपसे definition पूछी जाए ना, तो you need to write it something like an embedded system. An embedded system. कल किस चीज की क्लास उन्होंने लेनी है? Do you guys also have IGCSE Sir Abbas and Sir Suleiman's class tomorrow? I guess they have an AS level class tomorrow, not sure. Oh, चलो फिर तो देख लो guys अब
मुझे तो इनका नहीं पता, but yes, you guys need to come tomorrow, inshallah. Yeah. So yeah, back to the course content. So an embedded system is basically what it is: a combination of hardware. An embedded system is a combination of hardware and software, which is basically designed, which is designed to carry a specific set of tasks, which is designed to carry out a specific set of tasks. Now, why am I talking about a specific set of tasks? Like अगर आप लोग ये सोचो कि आप लोग के पास एक कंप्यूटर आता है, guys in the class, quickly इधर chat box में बाद में वो करना, but I've written this definition जिसको अगर आप लोग पढ़े, you're going to get an idea that an embedded system is a combination of hardware and software, and it is designed to carry out a specific set of tasks. These are three very important ones. And you might be wondering by even these mobiles or these computers we might have, they are also a combination of hardware and software. So are they also an embedded system? No. There's a difference between these computers and electronic devices which we have when compared to embedded system. अगर आप लोगों से सिंपल अल्फाज में कोई पूछे ना नॉन सीएस गाय कि गाइस टेल मी व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम, आपने बोल देना एम्बेडेड सिस्टम इज दैट टाइप ऑफ कंप्यूटर, that type of device which is like which combines hardware and software. लेकिन embedded system only carries out a specific set of tasks. This basically means कि उसने एक ही टास्क करना होता है, सिर्फ एक. Like अगर मैं बोलूं आपके पास अभी लैपटॉप है, you can play games, you can take class, you can take pictures from your webcam, you can watch movies, you can talk to each other. Say just like that, the whole things can be done by your phone, on your tablet, maybe on your consoles too. तो ये तो मल्टी आपको टास्किंग अलाउ करते हैं. It allows you to do multiple things. Remember, embedded system ना आपको multiple things करने की इजाजत नहीं देता. Embedded system is a type of computer जो कि सिर्फ एक टास्क करता है. So if I make a device जिसके ऊपर आप सिर्फ क्लास ले सकते हैं, so वो आपके एक embedded system बन गया. क्यों? Because I have combined hardware with software. I have made some type of computer. Lekin on that specific device, I can only carry out one single specific task, which is what? Taking class. But now your computer, the one in which you might be sitting in front of the device right now, उसके ऊपर तो अभी आप YouTube भी खोल सकते हैं, आप Instagram भी खोल सकते हैं. You might be even able to play games. So आप multiple tasks जब एक चीज पे कर सकते हैं, that makes it something out of the embedded systems की जो requirement boundary है. So exactly, बिल्कुल अहमद, हम इसकी examples आगे बहुत डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन फॉर नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि एम्बेडेड सिस्टम ऐसे डिवाइस है जिसके ऊपर सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क कैरी आउट होता है. नाउ टिल दिस पॉइंट हमने काफी वो पढ़ लिया कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, एंड वी हैव डिस्कस सीपीयूज एंड ऑल दैट स्टफ इन ग्रेट डिटेल कि किस तरह एग्जीक्यूशन होती है वगैरह वगैरह वगैरह. अभी जो हमने पढ़ने हैं ना, अभी हमने पढ़ने की यार जो हमारे पास लैपटॉप्स बनते हैं, जो हमारे पास फोन्स बनते हैं, जो हमारे पास कंसोल्स होते हैं, उनके अंदर जो सीपीयू आता है, दैट प्रोसेसर. यस, वॉशिंग मशीन इज एन एग्जांपल. बिल्कुल, वॉशिंग मशीन जो आपके ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आते हैं घर में, इट इज समथिंग पावर्ड बाय समथिंग, राइट. आपकी उसके अंदर टाइमर लगा होता है, इट चेक्स कि यार वाटर लेवल ऊपर नहीं आ रहा है, लाइक इट इज यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ सेंसर्स, राइट. So based on that sensors, it has a type of computer within it which is monitoring the whole thing. Lekin tell me one thing, can you play games on a washing machine? No, right? You can only wash clothes. So it is a type of computer, like क्योंकि उसके अंदर सेंसर्स है, सेंसर्स के डेटा को कोई चीज प्रोसेस कर रहा है, इट इज मॉनिटरिंग द टाइम, इन चीजों को कोई चीज प्रोसेस करे, दैट्स अ कंप्यूटर. लेकिन it is only there to conduct a very specific task which is just washing clothes. अब अगर ये कोई लैपटॉप होता तो मे बी आप इसके अंदर गेम्स अगर इंक्लूड कर लेते तो दैट इज समथिंग एल्स. फिर इसी तरह टेस्ला के अंदर जो आपके जीपीएस सिस्टम जो गाड़ियों में आता है, दैट इज अ टाइप ऑफ लाइक एम्बेडेड सिस्टम. आप मुझे बताओ आपके जो जीपीएस गाड़ियों में लगा होता है, नॉट टॉकिंग अबाउट दोस एंड्रॉइड car TVs and all, just talking about that navigation GPS system, it is type of computer, right? It is getting data, लेकिन at the same time it is only there for navigation. आप उस पे गेम्स तो नहीं खेल सकते. अगर आपकी गाड़ी में वो वाले ऑप्शन आते हैं जिसके आप गेम्स भी खेल सकते हैं, then that's not an embedded system, that is a proper computer system installed in your car.
तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि आगे हम इसकी बहुत एग्जांपल्स पढ़ेंगे, लेकिन फॉर नाउ जस्ट नो कि एम्बेडेड सिस्टम इज दैट टाइप ऑफ बेसिकली यू कैन से कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू क्या होता है कि आप कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क या फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं. नो ऑल दी सीपीयूज जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, प्रोसेसर्स, देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स व्हिच आर आउट देयर जो कि यूज होते हैं. Now this in your book has been mentioned within the embedded systems वाला topic, so हम भी इसको अभी करें, but do know कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि यार डिफाइन दिस, define this, define this. So these three types जिनको मैं अभी कर रहा हूँ, you guys should know its characteristics because it can be tested in your exam. So the very first type of processor या something जो आप बोल दे, something computer type of device that is in your course is basically known as the microcontroller. Microcontroller. अब microcontroller क्या चीज है? Again, this is what I'm discussing the CPU mechanism. जो आपके अब जो वॉशिंग मशीन आपकी है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, या फिर जो ऑटोमेटिक डिश वॉशर है, जस्ट लाइक अहमद मेंशन, उसके सॉरी फॉर दैट, उसके अंदर डेफिनेटली देयर इज सम कंप्यूटर, राइट? तो जो उसके अंदर जो कंप्यूटर है उनके तीन टाइप्स है. The first type is known as microcontroller. Now, what's a microcontroller? You guys need to know कि when discussing microcontroller या जो इसके बाद वाली जो चीजें हम पढ़ेंगे, you just need to memorize कि यार microcontroller के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं. So the first thing that is there in your microcontroller is basically a CPU in addition to RAM and ROM. So आप ये बोल देते हो कि आपके पास एक चिप होती है, there is a single chip, and उस चिप के ऊपर क्या चीजें आती है? It includes a CPU, and alongside the CPU we also have RAM and we also have ROM. Now ROM को हम आगे इंशाल्लाह चैप्टर 3 में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, but for now do know कि a microcontroller is a type of chip, a type of computer which is basically a single chip जिसके ऊपर आपका एक CPU लगा होता है, and उसके साथ you have RAM, ROM and other peripheral devices which are basically all embedded on a single task. No, when you have a KB को आप 1000 के साथ करते हैं, when it's KIB, KB, उसको आप 1024 के साथ करते हैं. तो remember one with the smaller I, that is something जिसमें आपने 2 raised to power वाला करना है, तो 1024. जो normal KB है उसमें 1000. Internet router might not be the example for that because internet router को अगर आप देखो अपने घर में, it is also something जिसके साथ आपके टेलीफोन डिवाइस भी कनेक्ट होता है. So you can use it for your telephone router, what do I call it यार, इसको क्या बोलते हैं, that telephone device जिससे आप कॉल कर सकते हैं, PTCL जिसको हम बोलते हैं, right? At the same time, landline. At the same time, you can also use it to connect with your maybe console. तो इंटरनेट भी प्रोवाइड हो रहा है, तो आप इंटरनेट प्रोवाइडिंग एज वेल एज कॉल फैसिलिटेशन, आप दो मेजर चीजें राउटर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. एट द सेम टाइम मे बी डेटा ट्रांसफर भी अगर राउटर करे, सो यू आर डूइंग 3 थिंग्स ऑन अ राउटर. सो राउटर इज नॉट अ प्रॉपर एग्जांपल फॉर what do we call it, an embedded system. Now back to what microcontroller is. Okay, microcontroller is basically something जिसके अंदर एक CPU होता है, उस CPU में के साथ आपका होता है RAM, ROM and other peripheral devices. What are peripheral devices? एक सेकंड में आपको बताता हूँ. Peripheral devices basically refer to वो चीजें जिससे आप कंप्यूटर के अंदर कोई चीजें इंक्लूड कर सकें. लाइक अगर मैं ये बोल दूं कि जो आपके कंप्यूटर के अंदर ये हेडफोन का जैक है, या फिर आपके कंप्यूटर के अंदर यूएसबी पोर्ट्स हैं, सो व्हाट आर दोस आर बेसिकली पेरिफेरल डिवाइसेस व्हिच अलाउ योर कंप्यूटर to be connected with some external device. So if I want to plug in a mouse, तो I have a USB A, right? तो मैं USB में plug in करता हूँ अपने कंप्यूटर के, and I can connect a mouse. If I want to plug in a headphone, I have a jack up here जिसके साथ मैं लगा लूँ तो वो headphone connect हो जाएगा. So microcontroller वो type of device है which जिसके ऊपर ये CPU alongside RAM, ROM and other peripheral devices, इसको मैं थोड़ा वो भी कर देता हूँ, input devices, input/output devices. Say input/output devices. जो other peripheral devices को सबके सबको when you embed it on a single chip, when you embed embed का बेसिकली सिंपल अल्फाज में मतलब ये है कि आप सबके सबको एक जगह के ऊपर ले आओ, you connect everything with each other on a single plate or a single chip, all on a single. When you embed all this,
on a single chip, on a single chip, it is basically known as chip. It is known as what? It is known as your microcontroller. Microcontroller. सो आपको ये दो तीन पॉइंट्स इसमें याद होने चाहिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आपको बेसिकली इन तीन चीजों में जो डिफर करेगा ना, दैट इज दीज पॉइंट्स कि यार सीपीयू के साथ क्या कुछ आता है. यू हैव रैम रोम, यू हैव अ सीपीयू एंड यू हैव अदर पेरिफेरल डिवाइसेस. दैट इज व्हाट these three things when embedded on a single chip becomes a microcontroller. अब इसके बाद जो चीज हम पढ़ेंगे ना, जो इसके बाद वाली टाइप है, that is known as microprocessor. माइक्रोप्रोसेसर. अब माइक्रो प्रोसेसर और इन चीजों में सबसे बड़ा मसला ये कि यार इनके नाम काफी मिलते जुलते हैं. वन इज माइक्रो कंट्रोलर, वन इज माइक्रो प्रोसेसर. सो देयर इज अ ग्रेट चांस कि यार आप कोई इशू प्रॉब्लम इसमें एरर बना लो. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप इसको बहुत अच्छे से याद करो, वरना अगर आपसे गलती हो जाती है सो यू आर जस्ट लूजिंग 2 to 3 मार्क्स. तो ये याद रखना, व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर एंड व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर. तो माइक्रो प्रोसेसर क्या चीज होता है? माइक्रो प्रोसेसर, जस्ट लाइक बिफोर, it is basically a chip. सही. It is a type of integrated circuit on a chip. जिस तरह पहले ऊपर वाला सेम टू सेम बात कि चिप के ऊपर हमारे पास एक इंटीग्रेटेड सर्किट सा बना जाता है. लेकिन what's the difference between your microcontroller and a microprocessor? The microprocessor only contains a CPU, which only, this is important, only contains a CPU. So this means you don't have any sort of RAM, ROM or other peripheral devices already on the circuit. If you want to add, आपने खुद add करनी होती है. It's not there within the computer. So you need to add RAM, ROM and other peripheral devices. Why do you need to add them? If required, अगर आपको चाहिए, सही है. So it's important आप लिख लो कि if required. And also note, RAM and stuff won't be there at the first place. So जो आपका ये इतना मैंने लंबा लिख दिया, इसमें आपको जो एक important point note करना है, that is the fact you need to know कि microprocessor is just like the microcontroller. लेकिन if you remove RAM, ROM and other peripheral devices from the existing microcontroller से अगर आप RAM को हटा दो, ROM को हटा दो, other peripheral devices को हटा दो, and there is only a singular chip जिसके ऊपर आपका CPU लगाओ, so it becomes as a microprocessor. And when you add a RAM and you also add ROM and you also add these input output devices के लिए jacks and ports, like which are known as peripheral devices, so what happens? It becomes a microcontroller from a microprocessor. So ये दो चीजें तो आपको समझ आ गई होंगी कि यार एक CPU होता है सिर्फ और दूसरे में CPU प्लस RAM, ROM और peripheral devices ऐड हो जाती है. और जो माइक्रोप्रोसेसर होता है उसके अंदर ना आपके पास RAM होती है, ना आपके पास ROM होती है, ना आपके पास peripheral devices एग्जिस्ट करती है. एंड अगर आपने करनी है तो you need to add it on your own. अब ये दो टाइप्स तो हो गए. There is one third type which is basically known as system on chips. Systems on chips. And इसका जो short form है, it is basically SOC. So SOC वैसे जहन में रख लो, you don't need to write SOC in your exam या कहीं पे भी आपने short form कभी ना जाना, सही है. But अगर यार that is something microprocessor के ऊपर, microprocessor is only a CPU. So आप मुझे एक बात बताओ, जब आप कोई चीज डाउनलोड करते हैं उसके लिए you definitely need RAM, right? Why do you need RAM? If you want to download it from Google Chrome, तो Google Chrome पहले कहीं पे रन होगा, it is going to go into your RAM, right? So when you don't have RAM, तो आप Google Chrome नहीं ओपन कर सकते. If you don't have a hard disk, तो आप डाउनलोड कहां पे करोगे? फॉर डाउनलोडिंग यू नीड सम मेमोरी, राइट? एंड मेमोरीज एंड हार्ड डिस्क, व्हिच बेसिकली मींस कि आपने ये अदर पेरिफेरल डिवाइसेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, आपने यहाँ पे मेमोरी का बंदोबस्त करना है. यू नीड टू ऐड रैम. एंड व्हेन यू बेसिकली टाइप ऑफ कम एंड मेक समथिंग लाइक अ माइक्रो कंट्रोलर वेयर यू हैव अ सीपीयू, यू हैव रैम, रोम, यू मे बी कनेक्ट अ मेमोरी डिवाइस, तो हाँ
उस केस के अंदर you might be able to download it. But again, these microcontrollers and microprocessors or system on chips, these are not made for your, what do we call it, downloading या ये वाली चीजें. वो तो आपके computers करते हैं which allow multitasking. These three things are basically used in your embedded system, which are there for only a single task. Like for instance, अब जो microcontroller है, ये मैं अगर वॉशिंग मशीन के अंदर इंक्लूड कर दूं, सो सीपीयू इज गोना इंश्योर कि यार द वॉशिंग मशीन वर्क्स राइट वे बाय इंश्योरिंग कि वाटर लेवल सही हो, टाइमिंग को मैनेज करे. इसको सब कौन करेगा? इट्स गोना बी सीपीयू. अब जब वो सेंसर काम करे, सेंसर का डेटा कहां पे स्टोर होगा? इट्स गोना बी देयर इन योर रैम. रॉम का क्या काम होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन रॉम स्टोर्स बेसिकली डेटा अबाउट द डिवाइस, दैट इज बेसिकली इन योर रॉम. ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो जब आपकी जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं बाय द कंपनी, वो आपके रोम के अंदर होती है. जो अदर पेरिफेरल डिवाइसेस है, अगर इसमें तो वॉशिंग मशीन में तो जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर इंस्टेंस इफ आई वांट टू हैव समथिंग जो इसके अंदर, मे बी इफ आई वांट टू नो समथिंग या समथिंग एल्स, तो उसके लिए अदर पेरिफेरल डिवाइसेस भी हो सकती है. तो जो ये वाली चीजें हैं या मे बी इफ आई वांट टू कनेक्ट समथिंग, या अगर लेट्स से फॉर इंस्टेंस अ वॉशिंग मशीन हैज अ चार्जिंग पोर्ट विद इट फॉर योर मोबाइल फोन, तो अब मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए डेफिनेटली यू नीड अ पेरिफेरल डिवाइस. आप यूएसबी प्लग इन करें, यू कैन चार्ज योर फोन. तो दिस बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर इज समथिंग व्हिच यू माइट बी एबल टू यूज इन योर वॉशिंग मशीन और ऑटोमेटिक डिशवॉशर. ये इस तरह की चीज है. माइक्रो प्रोसेसर सेम टू सेम, लेकिन अगर मुझे ना उसमें वो चाहिए, रैम चाहिए ना रोम चाहिए, जस्ट नीड अ सीपीयू मे बी जस्ट टू प्रोसेस डेटा, तो आई माइट यूज अ माइक्रो प्रोसेसर. And then I have something known as systems on chips. Now the system on chip SoC is basically the one which is in दोनों का combination, and it is basically something जो कि बिल्कुल कंप्यूटर की तरह ही ऑपरेट करता है, but it is not a computer. Why? So system on chips, it may contain a microcontroller at the start. So for the microprocessor, okay, let me even have a search, an example for microprocessor. Let's see गूगल हमें क्या बताता है. हाँ, अच्छा, हाँ. सो माइक्रो प्रोसेसर की हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, द कोर i5 विच यू हैव ऑन योर पीसी, द प्रोसेसर विच यू हैव ऑन योर पीसी, जो हम बोलते हैं ना कोर i5. अब मुझे एक बात बताओ, जो कोर i5 आपके पीसी के ऊपर होते हैं ना, दैट्स अ वेरी स्मॉल चिप लाइक दैट. वो आप अलग ही लगाते हैं, वो आप अलग लगाते हैं. You don't have a RAM within that chip. You include a RAM, you have these memory sticks connected separately in your computer. It's not there within the processor, right? आपका जो कंप्यूटर बनता है, it is something like, देखिए, if this is your case, just a moment. अगर आपका ये केस आता है, ओहो, मेरा बैड डायग्राम बन गया, लेकिन इसके अंदर if this is the whole case, इसके अंदर मे बी you have a chip which is just like that. This might be core i5. अब ये तो आपका i5 हो गया, लेकिन इस चीज के अंदर आप मुझे एक बात बताओ, do you have the RAM, do you have these input output devices within this box of i5? No, right? आपकी रैम स्टिक्स यहाँ पे अलग कनेक्टेड होती हैं, like maybe this is your memory, DDR5 16 GB रैम स्टिक्स. यहाँ पे आपका ग्राफिक कार्ड होता है, यहाँ पे मे बी यू हैव योर फैन, यहाँ पे यू माइट हैव योर मेमोरी, एंड एट दिस पॉइंट जो आपका अगर लेट्स से कंप्यूटर का फ्रंट साइड देखते हैं, तो यहाँ पे यू हैव दोस इनपुट आउटपुट डिवाइस. सो दिस माइट बी द यूएसबी पोर्ट, एंड ऑल ऑफ दिस इज एट द एंड connected using wires. But the thing is, this thing is basically a microprocessor. Why? Because within this chip, you don't have the RAM. RAM is connected externally. It is something जो कि अलग से connect है. You don't have the memory. Maybe memory यहाँ पे हो. Okay, आपकी memory यहाँ पे हो. At the same time, maybe power supply अलग connected हो. Input output अलग connected है. तो अगर आप देखो, तो आपके जितने प्रोसेसर वाला सीन है, उसके ऊपर तो कोई चीज नहीं है, राइट? इट्स समथिंग स्टैंडिंग अलोन. तो अब आपको समझ आ गई माइक्रो प्रोसेसर किस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई हो सकता है. अगर इसी के अंदर मैं रैम भी डाल दूं और ये इनपुट आउटपुट चीजें इसी चिप के अंदर डालूं, तो इट बिकम्स अ माइक्रो कंट्रोलर. सो इज दिस क्लियर? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. नाउ जो सिस्टम ऑन चिप्स वाली बात है, एसओसी. व्हाट इज एसओसी? इट माइट बी इन वेरी सिंपल अल्फाज. एक सेकंड गाइस, 2 मिनट, अजान हो रही है. लेट मी जस्ट वो खत्म होने दो. Okay, so back to where we were. So अब system on chips क्या चीज होती है? System on chips is basically the upgraded form of
your microcontroller. So the very first thing you need to know is कि a system on chips, it might contain this, might, it might already contain the microcontroller which we discussed ऊपर. So हम ये बोलते थे, it might contain, oh, I guess internet started doing Muslim once again. It will already contain, बिल्कुल बिल्कुल, it will have the same just like that. It might contain, यार क्या हो गया है? It might contain the microcontroller. So जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है, जो हमने ओरिजिनली सबसे पहले पढ़ा था, वो इसके अंदर शायद बिल्ट इन आता हो. So we are basically doing what? We are trying to upgrade the microcontroller. So we had the microcontroller which has your RAM, which has ROM and other peripheral devices, and उसको अब हम upgrade करें. How? अब जब microcontroller के अंदर हम बाकी चीजें include करते हैं ना, we are going to be including further more components. It might contain the microcontroller, and then when you add, guys, it is working a bit slow. Wait, let me just refresh the page and it's going to start. It might get better. Just a moment, guys. It sometimes lags. I don't know why, but chalo. Let me just refresh the page and inshallah it will be good to go. So yeah, back to where we were. Let it get opened and फिर हम start करते हैं. So हाँ, बिल्कुल ही अब if I want to explain it up here, तो अब आप system on chips क्या होता है? जब आपके पास ये चीजें आ जाती है ना, माइक्रो कंट्रोलर, इट हैज द रैम रोम एंड ऑल दी स्टफ, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, डज इट हैव मेमोरी, डज इट हैव दैट पावर सप्लाई, डज इट हैव इनपुट आउटपुट की चीजें, डज इट हैव मे बी सेकेंडरी स्टोरेज या समथिंग एल्स? नो, राइट, इट हैज नथिंग. लेकिन इफ यू एड ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड इन सिंपल अल्फाज आप एक कंप्यूटर इसको बना दो, तो इट बिकम्स अ सिस्टम ऑन चिप. इसीलिए इसको हम बोलते भी है, ये इट इज नोन एज सिस्टम्स ऑन चिप, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर. इट इज ऑलमोस्ट अ computer which is identical to the way we have been basically looking at these normal computers जो हमारे पास होते हैं. So let it get open, guys. पता नहीं यार, एक इसमें मसला है. Even mailed them कि यार let me download the app onto my PC, but they didn't get back. Thanks to Pakistan, this app is basically not available for download in Pakistan. So that's a big issue. But still, chalo, back to where we were. So I was talking about it might contain the microcontroller, right? And when you add extra components, it becomes a what? It becomes your system on chip. It becomes system on chip. But what do I mean by components? I mean stuff like related to maybe memory. So memory is a very important point. मतलब आप memory में I mean maybe add a hard disk, maybe add a SSD. हाँ बिल्कुल, when you convert your microprocessor into something similar to a computer, it is known as a system on chip. So memory आप डाल दो, आप input output IO devices are basically what IO basically means, input output device. So like if I make a speaker, if I like make sure कि इसके अंदर एक built in speaker भी आता हो, so that's an output device, right? Because वो आगे हम पढ़ेंगे, आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा. तो input output devices आप लगा लो. फिर maybe if you want to add something else, maybe some other ports, तो अगर आप ये सारी चीजें लगा लो and you make sure कि all of this is done on a single wire, on a single chip, तो आपके पास एक चीज बन जाती है which is basically known as systems on chips. So SOC अगर सिंपल अल्फाज में बताओ, माइक्रो कंट्रोलर का एडवांस फॉर्म है जिसमें you add extra components like memory, input output devices and all of that on a single chip, and फिर वो almost everything, it almost performs the same way like a normal computer. सही है. So ये आपके तीन type of general computers हैं. You have the system on chips, you have the microprocessor, and then you have a microcontroller. अब अगर मैं आप लोग को एक एग्जांपल दूं where we might be having a system on chips, so I might say कि let's say for instance, if you guys might have ever seen on Google or on YouTube, you might have those smart glasses नहीं होती जो लोग पहनते हैं, but those are like having that display up here and बाकी चीजें, उस जो smart glasses है, that might
be a system on chip if you include the availability of opening Google Chrome और playing stuff on it, या फिर अगर कोई ऐसी चीजें या जो आपकी VR के headsets होते हैं उसके ऊपर भी अगर आप कि built in चीजें आ गई कि like you might be able to access Netflix directly on your VR headset. So that is something which might be similar to system on chip because it behaves somewhat similar to the actual computer. Again, a computer is a different thing from all of these three things. जो हमारे पास अभी मेरे पास laptop है, you might be having a phone or a computer or a tablet. How is that different? Because your computer allows you to do multiple things. It allows you to do multiple things. I have this notes taking app open. I have the Google Meet website open. I might have my WhatsApp app open. I might have this operating system running. So I'm doing multiple things at once. जो ये तीनों टाइप्स है ना, these are basically there ताकि आप embedded system में एक specific task को execute कर सके. So आपको ये समझ आ गई ये तीन कौन से किस्म के टाइप्स हैं, इनमें क्या क्या चीजें. Just make sure आपके पास ये तीनों पॉइंट्स जो है ना ये आपको याद हो कि what's the difference between microcontroller, microprocessor and your system on chips. तो हमने ये दो तीन चीजें तो कर दी. अब embedded system के अंदर I just need to make sure आप लोग को ना इसके एक डायग्राम में करा दूं कि अगर आपको डायग्राम आता है एग्जाम में बनाने के लिए तो आप लोग को पता हो कि यार हाउ डज एम्बेडेड सिस्टम वर्क. सो लेट मी जस्ट ऐड अप द ओहो गाइस माय बैड एंड नाउ इट्स गोना टेक टाइम बिकॉज़ इसको मैं फिर से ओपन करेगा यार. आई एम सच अ बेवकूफ इंसान, बट आई होप इट ओपन्स क्विकली. I thought it's just gonna go to that opening file wale jagah and I can add a picture and it just went off to the home screen. So आप लोग के कोई questions तो नहीं है until the moment it loads up here. आप लोग के कोई questions है regarding these three things? Okay. Great. Okay, now back to adding the picture वाली चीज. Now let me just quickly add a picture. किधर गया? I took a screenshot and I have the screenshot up here. Yes. So जो आपका एक कंप्यूटर चलता है ना, it is embedded system. Again, this is embedded system. Again, the picture is from your book. So embedded system works in a very similar manner to the image you might be just looking at right now. आपके पास क्या कुछ होता है उसके अंदर. Let me just open it up as full screen and I just forgot doing it. So the video might be a bit wrong. Dimensions उसके शायद खराब हो. लेकिन what happens is कि आप ना जब भी किसी embedded system को बनाते हैं, at the start you have something known as input. What do I mean by the word input? Input basically means कि यार if I want to input something, I need to give it some data. Like अगर मैं ये एक automatic washing machine की example ले लूँ, exactly, I need to give it some data. What will be the data? I might be like यार I'm washing this much clothes. आप उसमें मैं बता दूं कि like क्या कुछ input हो से. I'm not sure about a washing machine, but let's say उसमें मैंने कोई input देना होता है, like instruction में दे दूं maybe हाँ फास्ट वॉश या मे बी ड्राई कर दो कपड़ों को या ये चीजें. दीज आर बेसिकली योर इनपुट. अब जो ऊपर आ रहा है एनालॉग और डिजिटल, ये क्या होता है? एनालॉग इज समथिंग जो कि आप सेल्फ हाथों से करते हैं. सो लाइक अगर आप डायल को घुमाते हैं, डायल इसमें डालते हैं या फिर कितने कोई चीज हाँ टाइम सेट करते हो, तो इफ आई डू इट यूजिंग दैट डायल, डायल को मैं खुद करूं, दैट इज एनालॉग, समथिंग जो मैं खुद अपने हाथों से करूं. डिजिटल ऑन द अदर हैंड इज समथिंग जो कि मैं अब डायरेक्टली उसके ऊपर कर दूं कि 15 वो कर दूं तो वो हो गया. थैंक यू अहमद जस्ट टोल्ड अस कि यार वी नीड टू टॉक अबाउट सोप क्वांटिटी. हम कर सकते हैं, हम पाउडर क्वांटिटी और ये चीजें इंक्लूड कर सकते हैं. तो बिल्कुल आप ये जो चीजें ये आप इनपुट देते हैं. सो आप सबसे पहले कंप्यूटर को देते हैं किसी कॉन्टेक्स्ट में इनपुट, यू गिव इट दैट डेटा. तो वो जब एक दफा हो जाता है देन आ जाते हैं आपकी सीपीयू वाली कहानी. सीपीयू वर्क्स अप हियर. It executes your data, the software and the hardware on the embedded system. Make sure कि यार आप सेंसर यूज करें तो वाटर फ्लो चेक हो, मैकेनिकल कंपोनेंट से मे बी जो आपके कपड़ों को इस तरह रोटेट कर रही होती है जो चीज, दैट स्टफ व्हिच रोटेट्स द क्लोथ्स एंड ऑल दैट, मैकेनिकल कंपोनेंट्स. एक्चुएटर्स आर समथिंग ये आगे हम आउटपुट डिवाइस में पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइस में पढ़ेंगे तब आप लोग को बेहतर समझ आ जाएगा. सॉफ्टवेयर माइट बी दिस थिंग जो कि आपकी सीपीयू को बता रहा है कि यार इफ वाटर लेवल इज बिलो दिस पॉइंट मे बी गिव इट सम सॉर्ट ऑफ आउटपुट कि यार ऐड वाटर. जो आउटपुट है वो क्या है? इट इज समथिंग लाइक कि अगर मैं बोल दूं वाटर लेवल रिड्यूस हो जाता है या मे बी मैं बोल दूं द अमाउंट ऑफ सोप powder reduce, तो जो आपके CPU है it might give me an output who might be standing in front of the washing machine and it might come up as a text add powder. So मुझे समझ आ जाएगी कि ओके ये चीज हो रही है. अब यहाँ पे जो टेक्स्ट आप वो पढ़ ले रहा है समझ ले रहे. No, it is talking the same thing कि यार जो latest embedded systems है they are mostly the system on chips वाले category में. So it like allows you to have various
input output devices, and it also allows you to have number of applications at one singular device. तो at the same time आप simple अल्फाज में बोलो तो आप system on chips की आप demand बढ़ती जा रही है, लेकिन आप ये सारे कॉन्टेक्स्ट को देखिए. We have a software which is powering your CPU. We also have an hardware which is basically this processor and all these devices, and we have basically linked all of them onto a single chip just to make sure what कि यार आपके कपड़े सही से धो सके. So you have an input, then you power it using a CPU, and then you get some sort of output. तो ये जो सारा का सारा ये हो रहा है, this is how your embedded system works. So this is how your embedded system is different from your normal computers. क्योंकि अब normal computer ये होता है ना, तो maybe it might have allowed you to play YouTube too. It might have allowed you to download stuff too. लेकिन यहाँ पे even though you have a CPU, even though you have your software and everything, you can only do one specific task, which is what? Which is basically washing clothes. So is this overall diagram clear कि यार embedded system काम कैसे करता है? अगर एग्जाम में आता है कि make a diagram on how embedded system work, you just need to make this identical diagram. Input followed by software and hardware CPU वाली चीज, and then you have output. And ये जो user interface है, this is basically what? This is that keypad on your washing machine जो कि बोलो कि यार कितने हम टाइम के लिए चलना है, क्या क्वांटिटी मैंने ऐड की है, ड्रायर करना है, ये चीजें. तो ये यूजर इंटरफेस बेसिकली इस टाइप ऑफ आपका वही इनपुट जो हो रहा होता है डेटा, दैट इज बेसिकली डन बाय दिस. या मे बी इफ आई हैव सम मॉनिटर या सम स्क्रीन जिसके ऊपर मुझे डेटा पता लग रहा हो, तो वो चीजें यूजर इंटरफेस इसको रेफर करते हैं. सो एक्चुएटर क्या चीज होती है? एक्चुएटर हम आगे पढ़ेंगे. एक्चुएटर हमने आगे वैसे भी डिटेल में पढ़ना है आउटपुट और इनपुट डिवाइस के अंदर. लेकिन जो एक्चुएटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है, it is a type of device that basically converts your input signal into mechanical motion. Like what do I mean? Like अगर मैं ये बोल दूं कि if I say stop, stop का बटन अगर आता है, if I say stop, और स्टॉप के बाद मे बी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ब्रेकर्स इन द वॉशिंग मशीन जो गोल घूम रहा होता है, उसमें कोई ब्रेकिंग सिस्टम है कि द मोमेंट आई स्टेप स्टॉप वो इस तरह आगे हो जाए एंड योर मशीन कैन नो लॉन्गर रोटेट. ये जो ऐसे डिवाइस विच बेसिकली कन्वर्ट्स योर इनपुट थिंग्स, नो इट्स नॉट ओनली ऑन एंड ऑफ. आपके any device that basically converts your input signals into some mechanical work. Mechanical, no, not again voice detecting is something जो कि software work है. I mean input to mechanical. Mechanical क्या चीज है? Mechanical is something like which deals with machines. So these softwares वाली जो बात है वो इसमें नहीं आती. आपकी जो चीज input to mechanical stuff में relate करती है, like something moving, something. अच्छा, मे बी जो एक्चुएटर इज दैट थिंग जो कि अगर आपके एक रोलर चल रहा होता है जिसके ऊपर आप सामान रखते हैं, लाइक इफ यू गो टू एयरपोर्ट यू आर मूविंग समवेयर, देयर माइट बी दैट बेल्ट जिसके ऊपर आप सामान रखें एंड देन इट गोज ड्यूरिंग बोर्डिंग, राइट. तो वो चीजें जाती है. अब उसके अंदर अगर हम ऑफ का बटन कंप्यूटर में मैं बता दूं या कोई बटन प्रेस कर दूं, दैट इज इनपुट. बट एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस? द मशीन स्टॉप्स. So the machine is something which is basically mechanically powered. So your machine is powered mechanically. This is mechanically. I don't know क्या हो गया with my graphic tablet. It is mechanically. So जो आपके mechanically जिस चीज को हम input to mechanical signals में वो करते हैं ना, कि like अब उसको order मिल गया and it stops the mechanical machine. The machine no longer works. That thing is basically known as an actuator. So actuator के अभी आपको बस basic पता हो कि वो ऐसी चीज है जो आप उसको input दे दो and it does something which results in it moving mechanically, या बढ़े या ना चले या कोई इस तरह की गानी जो हो, that is done by your actuator. तो ये हम आगे डिटेल में और भी पढ़ेंगे. So it is 5:30 and यार मैंने और भी पढ़ाना था लेकिन चलो, I guess you also have classes, some other class at that point, at this moment, 5:30 पे. So I will be ending. No, I guess Manal has a class if I'm not wrong. Manal, you have a class, right, at 5:30? हाँ, clubs have started. You guys can go join those groups. And उसी के ऊपर आगे अभी details share होंगी. You can also, what do we call it, follow the Instagram page, conceptual.clubs के नाम से. So आपको काफी वहाँ पे details होंगी. Okay guys, so as Manal have a class right now, so we will end it up right here because I don't want कि कोई बंदा किसी चीज को miss करे. We will continue embedded systems tomorrow. Remember, we have a class tomorrow, inshallah, 4:30 to ideally 5:45. Tomorrow class will be a bit longer because I need to make sure कि input output devices हम start करें, because we comparatively spend a lot of time on this, what do we call it, जो RAM और ROM की मैं पहले 2-3 दिन में explanation दे रहा था ना, that went a bit too long. But चलो,
Also, make sure be at tight tomorrow 4:30 sharp. I'll be starting the meeting at 4:20. So any time after 4:25 आप लोग आते जाए, so that we can start off at 4:30 and end it at exactly at 5:45, 5:50, and we do a lot of things tomorrow. So tomorrow is an important day. Do make sure आप लोग time पे आए. And that is all for today. Okay, Rehan and everybody else. Allah Hafiz, and you guys can leave.